Hello students, welcome to our e-learning class Modern English of School Kunti Nagar, Nevada. Students, today we are going to discuss representing irrational numbers on the number line. Exercise 1E, chapter number 15. So students, representing irrational number just like root 2, root 3, root 5, root 7, and that's all are representing on the number line. So students, first of all we discuss the term represent root 2 on the number line. Okay, first of all we draw a horizontal line. Okay, horizontal line that is called the real line. So this is x and x dash. So we also call the x-axis, and the point O is called origin, and the point O represents 0. Okay, and student, root 2 represents on this number line. So first of all we take 1 unit from the origin, 1 unit. So 1, 2, 1 unit, it means 1 centimeter, 1 meter. Okay, so any, and that is 1 unit, and we take OA is 1 unit. Okay, OA is 1 unit, and we draw BA is perpendicular to the x-axis, x dash x. Okay, so AB is also a 1 unit, and join OB. अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हमको रूट 2 को नंबर लाइन पे इंडिकेट करना हो, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ऑरिजिन एक पॉइंट कट करेंगे इस नंबर लाइन पर, जिसको हम लोग O से इंडिकेट करते हैं, जीरो से इंडिकेट करते हैं. एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो is negative numbers, negative integers, and the right side of the right side of the zero is all the positive integers. So students, root 2, तो root 2 on the number line, root 2 को जब हमें नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, तो ये जस्ट लाइक एक बाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सपोज दैट, और 1 यूनिट हमारा बेस भी है और 1 यूनिट हमारा परपेंडिकुलर भी है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर और प्लस क्या 1 का स्क्वायर. अगर ये लेते हो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट. तो OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, दैट इज 1 का स्क्वायर, एंड OB इज इक्वल टू 1 यूनिट, दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एंड AB इज इक्वल टू रूट 2. ओके, सो रूट 2 को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पर OA जो डिस्टेंस हम लेंगे वो 1 यूनिट का लेंगे. ओके, एंड द डिस्टेंस OA इज 1 यूनिट. ओके, 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, और 1 यूनिट ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इसी पर, यानी BA इज द परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस 1 यूनिट. ओके, क्लियर. नाउ फाइंड OB. तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर by Pythagoras theorem, and OA is equal to 1 unit, that is 1 का स्क्वायर, और AB is equal to 1 unit, that is 1 का स्क्वायर. So 1 plus 1 is equal to 2. For students, OB is equal to root 2. So OB क्या है हमारा, root 2 यूनिट. An arc सेंटर O को हम सेंटर मानकर
और OB को रेडियस मानकर, O को सेंटर एंड OB को रेडियस मानकर एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा, सपोज दैट ये P पे कट करता है, तो ये पॉइंट जो है अंडर रूट 2 को इंडिकेट करता है. सो पॉइंट P रिप्रेजेंट अंडर रूट 2, ओके, ऑन द नंबर लाइन. स्टूडेंट्स, OP is equal to OB because this is the radii of the same circle. So this is the arc, and OP and OB is the radii of this circle. Okay, so OP is equal to OB. OB is equal to root 2 unit. So OB is equal to root 2 units and OP is equal to root 2 unit. Okay, so point P represents root 2 on the number line. My dear students, represent root 3 on the number line. Okay, so first of all, root 3 is a squaring of two numbers. First of root 2 का square and plus 1 का square, that is 2 plus 1, that is 3. Okay, so रूट 3 को नंबर लाइन पे इंडिकेट करने से पहले हमें रूट 2 को इंडिकेट करना है. ओके, रूट 2 इंडिकेट करने के बाद ही हम रूट 3 को नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए नंबर लाइन. ओके, एक्स एंड एक्स डैश. ए पॉइंट O रिप्रेजेंट 0. ओके, एंड first of all root 2 represents on this number line. So bit 1 2 3. So students, A, B and C. So OA, AB and BC are the equal distance on the number line. So distance between the any two integers are always same. 1 unit, it means 1 centimeter, 1 meter, that's all. So first of all, OA is equal to 1 unit. Okay, and we draw PA. We draw PA is perpendicular to OA and join OP. Okay, and AP and OA is 1 unit. Okay, so students, find OP. OP square is equal to OA square plus AP square. So OP square, OP is the hypotenuse, this is the right angle triangle. By using Pythagoras theorem, OP is the hypotenuse, OA is the base and the AP is the perpendicular. Okay, so hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square. So OA is equal to 1 unit, that is 1 का square, plus AP is equal to 1 unit, that is 1 का square. So 1 plus 1 is equal to 2 and OP is equal to root 2. So students, OP is equal to root 2 unit and O is the center and OP is the radius, and we draw an arc, and the arc cut the x-axis at the point Y. At that point Y represents root 2. Okay, and OP is equal to OA. OP is equal to OY. OP is equal to OY is equal to root 2 unit. Okay, root 2 का square plus 1 का square. Okay, so first of all OY is the base. OY is the base.
and O, the distance of O by is root 2 unit. O by is the root 2 unit. And we draw 1 unit is perpendicular to O by, that is Q. 1 unit is perpendicular to O by, that is Q. So join OQ. Join OQ. And O by is 1 unit. O by is 1 unit. And O by is root 2 unit. And Q by is 1 unit. Okay. And find OQ. In triangle, in right triangle, O by Q. Okay. So OQ square is equal to O by square plus Q by square. Okay. O by is equal to root 2 unit, that is root 2 का square, and Q by is equal to 1 unit, that is 1 का square, root 2 का square, that is 2, and plus 1 is equal to 3. So students, OQ is equal to root 3. So OQ represents root 3 and O is the center and OQ is the radius. We draw an arc that is Z, and Z represent root 3 on the number line. Okay students, and that's root 5. The root 5, that is 2 square plus 1 square. It means कि we draw a number line and O represents 0, a point O represents the 0, and 2 unit is the base. Root 5 represents on the number line, just like x and x dash, and 2 unit is the base. Okay, so 1 and 2, so that is 2 unit is the base, A and B. So here this is root A, 2 unit. Okay, 2 unit is the base, and CB is the perpendicular to 1 unit. CB is the perpendicular to OB, that is 1 unit. Okay, and join OC. Join OC. So OC square in right triangle OBC. Okay, so by using Pythagoras theorem, OC square is equal to OB square or plus BC square. Okay, so OB square, that is the 2 unit, so 2 का square, and BC is the 1 unit, that is 1 का square, 2 का square 4 plus 1, that is 5, and OC is equal to root under 5. Okay, so OC is equal to root under 5. O is the center and OC is the radius, and we draw an arc, and arc cut the number line at the point P, and point P represents root 5 on the number line.